Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. If you are new to this channel then please like, share and subscribe to my channel. I will be very happy. So लास्ट लेक्चर में हमने अपनी ट्रांसलेशन कंप्लीट की थी और अब आज हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएंगे. But before starting the video, please like, share and subscribe to my channel. Unit number 1, the savior of mankind. इसके क्वेश्चन आंसर्स 1 to 8 है. ठीक है, हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन इसका क्वेश्चन है, हाउ माइट द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का मुकरमा इन्फ्लुएंस द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस. ठीक है, इसका आंसर है मक्का मुकरमा इज लोकेटेड एज अ डेजर्ट सिटी सराउंडेड बाय माउंटेन्स विच शो इट्स सिग्निफिकेंस एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड रिलीजियस पिलग्रिमेज. इट रिजल्ट इन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस. क्लियर है. Moving towards the next question. इसका क्वेश्चन है, हाउ डज द emphasis on the Arabs memory and eloquence suggest about their culture before Islam. Arabs memory and eloquence. The emphasis on memory and eloquence highlights the Arabs' oral tradition, particularly their poetry and storytelling. This indicates a culture deeply rooted in artistic expression and intellectual skills, even in the absence of widespread literacy. Clear है. Moving towards the third one. Question है, what is the importance of the anecdote Hamad and Caliph Walid bin Yazid? Importance of the anecdote. These anecdotes demonstrate the Arabs' remarkable ability to preserve their values through oral transition. It also reflects their pride in language, literacy, taste, and eloquence, which played a crucial role in their societal identity before and after Islam. Okay, moving towards the fourth one. What parallels can you draw between the state of civilization described here and other historical periods of decline and renewal? डिक्लाइन ऑफ द प्री इस्लामिक अरब सोसाइटी. जब हम क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड के अंदर भी अटैम्प्ट करते हैं तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप उसको हेडिंग के साथ दें. इसलिए मैंने यहाँ पे इसके लिए छोटी छोटी जो है ऊपर हेडिंग्स जो है वो बनाई हैं. प्री इस्लामिक अरब सोसाइटी डिक्लाइन विच ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट एंड मोरल इशूज़ इज़ सिमिलर टू द यूरोपियन डार्क एजेस. इस्लामिक रिन्यूअल इज़ लाइक द रेनेसेंस ब्रिंगिंग कल्चरल एंड मोरल प्रोग्रेस. Moving towards the fifth one, that is, what challenges did the Rasulullah face in proclaiming the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, Tawheed, and the unity of mankind? Challenges for Rasulullah, peace be upon him. Hazrat Muhammad, peace be upon him, faced opposition from the Quraysh due to their idol worship and tribal division. He faced boycotts, persecution, and worked to unite tribes with the message of Tawheed and equality. Sixth one. Sixth question क्या है? In what ways did the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam elevate mankind to a higher level in both spiritual and worldly domains? Spiritually, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam introduced the concept of Tawheed, emphasizing a direct relationship with Allah and equality among humans. Worldly, he promoted social justice, the right of women and minorities, and the establishment of a cohesive society based on moral values and law. Moving towards the seventh one. How does the final Quranic verse, Quran 33 ratio 45 to 46, encapsulate the role and mission of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Final Quranic verse. The verse shows Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, your peace be upon him, as a guide, messenger of good news, and a warner sent to lead people to righteousness and share Allah's mercy. Moving towards the last one, that is, how does the author view the pre-Islamic Arabs? Write down the examples and the evidence supporting your inferences. Pre-Islamic Arabs. The author see pre-Islamic Arabs as skilled in poetry and memory but morally weak due to idol worship. And tribal conflict. Islam changed their social injustice and improved
their lives. ये थे आप लोगों के यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. आई होप आप लोगों को इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी. और इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन अल्लाह हाफिज़.